Hello everyone, welcome to second lecture on sets. In this lecture, we are going to discuss types of sets. Before going to our main topic, first we see some examples. From this example, you have to tell me the cardinality of these sets. What is cardinality? Cardinality, that means number of element in this set. So here the first example is set A contain x belonging to the natural number such that 6 less than x less than 7. So how many elements belonging to set A? Natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So 6, after the 6 we get directly 7. So there is a no element lies between 6 and 7 which is a natural number. So in this first example, cardinality of set A is 0. That means there is a no element belonging to this set A. Hence set A is empty set. In second example, B is equals to x such that x belonging to natural number and x square equals to 9. Now if we take the x square equals to 9, then x is equals to plus minus 3, because plus 3 square is 9 and minus 3 again square is 9. So x square equals to 9, that means x equals to plus minus 3. But here our first condition says that x must be natural number and natural number is start from 1. So 1, 2, 3, these are our natural numbers. Hence minus 3 is not natural numbers. So element which satisfying this both the condition is only 3. So here B set contain single element, that is 3. So cardinality of set B is 3. Now if we observe the example third, then C contain 1, 2, 3 and so on. That means it contains set of all the natural numbers. And we know that natural numbers are infinite. So C contain infinite elements. अगर ये तीनों एग्जाम्पल आपको क्लियर है, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सेट भी आपको क्लियर हो गया, बिकॉज यही सेट के टाइप्स हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सेट में उसी के बेसिस पे सेट के टाइप्स हैं. सो नाउ सी द फर्स्ट टाइप, दैट इज एम्प्टी सेट. जस्ट हमने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था कि 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, सो दैट सेट डज नॉट बिलोंग टू एनी एलिमेंट, दैट मीन्स सेट इज एम्प्टी. सो सी द डेफिनेशन. A set is said to be empty, or we can say null set or void set if it has no element. Or we can say the set which does not contain any element is called empty set or null set or void set. Now we see some examples of empty set. Here the first example is let A is equals to set of x such that 1 less than x less than 2, where x is a natural number. So again 1 and 2 इनके बीच में कोई natural number exist ही नहीं है, so कोई element set A में belong नहीं करेगा. That means set A is a empty set. Second example is B is equals to set of x such that x square minus 2 is equals to 0, where and x is a rational number. Rational number is a number which we can express in p by q form, where q is not equals to 0 and p, q are the integer. Now here if we write x square minus 2 equals to 0. Now see here x square minus 2 equals to 0. If we find the solution of this equation, then it is a x square equals to 2. Taking under root on both sides, so we get x equals to plus minus under root of 2. Now here under root of 2 is irrational number. So कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है कि जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे. फर्स्ट वो x जो है वो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड कंडीशन इज इट इज़ ए रैशनल नंबर. बट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का सोल्यूशन ही इरेशनल है. दैट मीन्स कोई रैशनल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. सो
एट ए टाइम दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करने वाला कोई एलिमेंट सेट बी में बिलोंग नहीं करेगा. दैट मीन्स सेट बी इज एम्प्टी सेट. नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर 3. C is a set of x such that x is an even prime number greater than 2. Tell me the prime numbers. If we take the set of prime numbers, then prime numbers start from 2. It is 2, 3, 5 and so on. So here in set of prime numbers, numbers start from 2 and after the 2 all the numbers are odd prime number. That means the number which is even as well as greater than 2, there is no such element exist. यहाँ पे prime numbers के set में सिर्फ 2 is a prime number which is even, otherwise remaining all the prime numbers are odd prime numbers. Hence अगर हम यहाँ पे इवन प्राइम नंबर की बात करते तो 2 है, बट ग्रेटर दैन 2 ऐसा कोई नंबर नहीं है. सो वी कैन से द सेट C इज आवर एम्प्टी सेट. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 4. D is equals to x such that x square equals to 4. Here x is odd number. Again here if we take the roots of x square minus 4 equals to 0, then we get x equals to plus minus 2 and both the numbers are even. So there is no element which is odd and satisfying the equation x square equals to 4. Hence set D is also empty set. Now we see the type number 2, सिंगलटन सेट. हमने जो एग्जाम्पल अभी सेकेंड देखा था दैट इज सेट B कंटेन x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सो हियर मतलब सेट B में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा? ओनली 3. सो हियर हाउ मेनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट B इज सिंगल एलिमेंट. दैट्स वाई सेट B इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. सो इसी के बेसिस पे ये डेफिनेशन है सिंगलटन सेट की. A set consisting of single element is called singleton set. Third type is finite and infinite set. Here, finite set that contain a finite element, infinite set containing infinite element. But हम किसी definition को लिखते वक्त उसी unknown word का meaning अगर उसी के form में लिखोगे तो it is not correct, because यहाँ पे they are asking finite set. So we are saying finite set contain finite element. So actually what is finite? So यहाँ पे जो unknown word है finite, उसी को अगर आप finite के form में लिखोगे तो it is not correct. So how to write the definition of finite set? A set which is empty or consisting of definite number of elements is called finite set. Now see here, empty set contain no element. So no element मतलब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे element ही नहीं है. So it is a finite set. Otherwise consist of definite number of element. A definite number of element is very important word here. What is definite number of element? मतलब हम बता सकते हैं कि सेट में 100 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है, 2000 है, 1 लाख है. सो 1 लाख रहा तो भी चलेगा, बट अगर हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन ए सेट, सो दैट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट. जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कार्डिनलिटी पूछा था. कार्डिनलिटी मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन ए सेट. सो अगर आपकी कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट कोई नेचुरल नंबर के फॉर्म में आप बता रहे हो 5, 7, 8, 100, सो कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट A इज n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर. किसी एलिमेंट में कितने एलिमेंट है ये अगर आप नेचुरल नंबर के फॉर्म में बता सकते हो तो देन द सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट. अब हमें फाइनाइट मतलब क्या है ये नोन है कि जिसको आप नेचुरल नंबर के फॉर्म में कितने एलिमेंट कंटेन है वो बता सकते हैं. सो वी कैन से अगर मुझे इनफाइनाइट को डिफाइन करना है तो वी सिंपली से द सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. नाउ वी सी सम एग्जांपल्स. हियर लेट S be a set of solution of equation x square minus 16 equals to 0. If we find the solution of this equation, then x square is equals to 16. That means x equals to plus minus 4. So here
set S contain plus minus 4, that means S is a finite set. Here total number of element contain set is 2. तो हम बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट उसमें कंटेन है. सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट. सेकेंड एग्जाम्पल, लेट G be the set of points on line. नाउ अगर किसी लाइन को आप कंसिडर करते हो, उसका एक छोटा इंटरवल कंसिडर करो, छोटा सा पार्ट ऑफ लाइन. सो क्या हो जाएगा अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करती हूँ. यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किए, दैट इज़ 2 and 3. इस लाइन के ऊपर 2 and 3 ये 2 पॉइंट्स हैं. अगर मैं इन दोनों के बीच में कौन से पॉइंट है उसका अगर सेट बनाऊंगी, तो यहाँ पे 2 के बाद में 2.5, 2.6, 2.7 up to the 3. Is it correct? Obviously no. अगर मुझे कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज़ लाइज बिटवीन 2 to 3 ऑन लाइन, तो ये अगर कलेक्ट करना है तो 2 के बाद में 2.00001 आएगा, 2.009 आएगा. अगर मैंने आपको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर बताने की कोशिश की तो हम उससे भी एक स्मॉल नंबर बता सकते हैं. इसका मतलब है यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा नियरेस्ट पॉइंट आएगा ये भी आप बता नहीं सकते. तो रिमेनिंग पॉइंट्स तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है. सो 2 के आप कोई भी नियरेस्ट पॉइंट मुझे बताओ, मैं उससे भी छोटा एकदम नियरेस्ट पॉइंट और बता सकती हूँ. इसका मतलब है यहाँ पे एलिमेंट्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं है. सो हियर 2 to 3 contain uncountable number of points. It contain rational as well as irrational number, and we know that irrational numbers are uncountable. So 2 to 3 इस small interval के अंदर, मतलब लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट अगर आप कोई भी प्लॉट करोगे और उसके बीच में कितने पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करोगे, तो स्टिल इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स. सो हेंस अगर इस छोटे पार्ट की ही बात करते हैं, कंटेन अनकाउंटेबल पॉइंट्स, तो पूरे लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे? ऑब्वियसली इट इज़ अनकाउंटेबल. हेंस वी कैन से द सेट G इज़ इनफाइनाइट सेट. आई थिंक इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्लियर है. ओके, द रिमेनिंग मोर एग्जाम्पल्स ऑन सेट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you. Like, share and subscribe.